Hello and good evening everyone. Welcome to StudyIQ live session, live MCQ session Paripurna batch ro jota apanko chalchi and welcome everyone to this live session, right? तो आज रो जो सेशन रही in the today's session we will go through what science and tech ऊपर जो हमरो MCQ रही ता ऊपर आज डिस्कस करिबा and जल्दी जल्दी join करते समस्ते share कर दे तुम friends मान को सहित so that they will also share and participate in the session. Good evening, Satru also joining me. Sasmita, Mudiliar, Subhasri, Shikha, Sunita Barals. Good evening to everyone. Jai Jagannath. And चलो फिर तो आज में सेशन को स्टार्ट करिए एमसीक्यू रही छी किछि बहुत बढ़िया एमसीक्यू रही छी टुडे सेशन विल बी ए ठीक है लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी प्रीटी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन रहबो गुड इवनिंग क्वींस ऑफ नेचर सुमित्रा सुनीता बराल गुड इवनिंग ऑल सो वी विल स्टार्ट द सेशन तो फिर चलो सेशन को स्टार्ट करिबा में चले we will start the session. Okay, so session will be interesting. Our friend Rajendra also there. Good evening everyone. चलो फिर सो एमसीक्यू सेशन जोटा रही आपंकर एमसीक्यू रही ये सेशन करें कौन हम लगातार जब आप करुँच सो दैट व्हाट विल बी बेनिफिट विल बी इज दैट कि आज द ओपीएससी प्रीलिम्स इज टू बी आई वुड से कॉर्नर ऑफ द मंथ इट्स वेरी क्लोज टू यू इट्स October month and that would the OPSC prelims will happens there. So before that it's a what I would say got a बहुत बढ़िया practice session. चलो फिर fast questions हमें देखा. Consider the following statements about the CRISPR Cas9 technology. Good evening Prakash, Afrin, Rajendra everyone. तो ये देखो Cas9 technology आजकल बहुत न्यूज रे चलची Cas9 technology जदि मु कहबी दिस वन इज बहुत ही ज़्यादा न्यूज रोचे Cas9 टेक्नोलोजी जदि मु कहबी बहुत न्यूज रोचे एंड दैट इज व्हाई Cas9 टेक्नोलोजी को हमें डिस्कस करिबा Cas9 टेक्नोलोजी सो ये तुम्हारा जीन एडिटिंग टेक्नोलोजी आपको हमें कहू जीन एडिटिंग टेक्नोलोजी रिसेंटली हमें कहबा राइस मध्य दीटा राइस को मध्य जीन एडिटिंग टेक्नोलोजी बा हमें कहबा टेक्नोलोजी रे तयारी करा जायछि सेटा मध्य तुमको पचारे परे योजना को पढुथो कुरुक्षेत्र को पढुथबो चलो फिर देखिबा ना ऑप्शन 1 ताले देखिबा हम फास्ट अच्छा 1 मिनिट हां ताले क्वेश्चन देखि दियो ऑप्शन मध्ये दियछि 1 2 3 4 से कहउछि it can be used for the targeted gene editing. This is targeted, the word is that targeted, this is correct. Precise or I would say precise आजकल जहाँ भी होछि ना precise होछि चाहे से precision agriculture नहीं जो चाहे से precision gene editing कथा नहीं जो which will be done through the Cas9 technology which would be done through the Cas9 technology. तो जदि आंसर मु देखिबी क्वीन ऑफ नेचर कहउछि 1 and 2 सस्मिता डी Satru C, Afrin D, that means Devardhi Krishnaman A, and Afrin all. Satru is going for what? Se coach ke Pusha and Kamla jo rice 2 rice has been done. That is genetically edited 2 rice. That is Kamla and Pusha. Sunita is saying D, Sasmita Prakash, Sasmita A, Prakash. Sasmita is D, Sasmita Behra, and Prakash is A. Sikha is all. So what is that? See, point is that when we comes to the Cas9 technology, it's a gene editing technology. That means this gene editing technology where we use protein. A protein will be used for the precious cutting. That means a targeted a protein will be used. What? A protein will be used for the precision cutting. It relies on RNA molecules to guide the Cas9 enzyme. This is also correct. It is originally discovered as a defense mechanism in bacteria. This is correct. This is also correct. See, so that means now ये technology is widely used in the world and especially China. Especially what I would say China. This technology is used. Let's say हमें कहबा कौन से गोटे parents अछि बा बेबीटा अछि भाबो अच्छा गोटे बेबी अच्छी भाव तो बेबीटा को भाव गोटे डिजीज पेरेंट्स को अच्छी बट आम चाहूँ से पेरेंट्स रु जो डिजीजटा चाइल्ड को न आसू तो तार गोटे प्रिसाइज जीन एडिटिंग करा सो दैट द डिजीज वुड नॉट बी ट्रांसफर टू द चाइल्ड राइट तो सेटा इनबॉर्न से इनहेरेंट करि परिबो नाही एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो डन
ना it would be guided, it would be what guided गोटे एथरे हम कोन कहते साधारणतः प्रोटीन्स और एंजाइम्स को यूज करा जाए सो दैट एटा प्रिसाइसली कट हो प्रिसाइसली जदि कट नहला पुनी असुविधा हिजबो दैट वुड बी व्हाट बायोइथिक्स आमे कहबा दो दिस टेक्नोलॉजी यू कैन आस्क एटा बायोइथिक्स पार्ट मध्ये तोर इथिक्स जेतल तमने पढुछो दैट कुड बी इथिक्स पार्ट रे तमरा हिजबो इसे अप्लाइड पार्ट राइट तो ये रहइबो तमर आंसर वुड बी ऑल तो आंसर वुड बी व्हाट ऑल आंसर शेष रे अछि तमर आंसर कोठी अछि लास्ट रे अछि नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट आर एप्लीकेशन ऑफ nanotechnology so nanotechnology तो मैंने जान आजिकली I mean nanotechnology बहुत यूज चलछि widespread use of nanotechnology in medicines in everywhere that means 10 to the power minus 9 so this would be what the nanoscale so that would be nanoscale 1 to 100 that would be 1 to 100 scale so nanoscale would be 1 to 100 and 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 so that would be 1 nanometer okay so now you have to do हाँ ये पूरा ही परिवर्तन तुम्हें जो हमें क्लास 9 टेक्नोलॉजी कहले जेमती हमें रिसेंटली व्हाट पूषा एंड व्हाट कमला ये टू राइस वेराइटी हमें क्लास 9 टेक्नोलॉजी की यूज करके हमें कौन करते सॉरी ऐसे व्हाट क्लास 9 टेक्नोलॉजी की यूज करके बा जेन एडिटिंग करा कि आपको मॉडिफाइड करा से बायोटेक्नोलॉजी पूषा एंड कमला जोड़ा कि तमरा आसीथला कोथरे ए मास तमे देखि परिबो कोथरे रही छि तमरो दैट वुड बी इन कुरुक्षेत्र साइट जस्ट हाँ तो आर आंसर दियो ठीक है right so which of the following is our application of nanotechnology से कुछ application of nanotechnology तो जदि हमें application of nanotechnology देखुचे देखो जेतले application आसे ना that means wide range it will have what wide range the range will be so wide that means if I say the drugs delivery yes it will be also done cancer treatment पे ही परिबो तो आंसर देखिबा मु मेजॉरिटी आंसर जदि हमें कहिबा सुमित्रा कोच डी सस्मिता डी शिखा डी Afrin all, Rajendra D, Afrin Prakash, Satrujit, everybody is going for the D except amiko Sasmita ए कहि तेणु करी कुरुक्षेत्र एटा थिला जोटा मु कहछि तो एटा मध्ये तमरा करेक्ट अछि then development of stronger and lighter material let's say carbon nanotubes for example I would say that means carbon nanotube per se I would say carbon nanotube this would be it would be what stronger and lighter material carbon nanotubes so that would be also so that is why this would be correct then production of quantum dots used in solar cell that would be also correct quantum dots means what quantum dots like that can be used in LED आमे जो टीवी देखुचे सेथरे मध्ये यूज हे परिबो so that better clarity आसो better visibility आसो efficiency will increase ये जो आमे quantums dot को यूज करूचे ना that will improve the efficiency right that efficiency will increase in many folds that quantum dots जोड़ा कि साधारणतः में टीवी एलईडी वगैरह तुम देखुछ सेथरे मध्य तुमरे यूज करा जाई था क्वांटम डॉट्स को एंड दिस क्वांटम डॉट्स आर वेरी हेल्पफुल समय आपको कोठी भी यूज कर पे यू कैन यूज इन व्हाट सोलार यू कैन मतलब आईटी इंडस्ट्री में साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट था ना सेथरा में यूज कर पे सो इट वुड बी अगेन डी सो अगेन डी it would be answer would be D तो आंसर कौन रहबे तमरो D so it would be again answer would be D तो आंसर कौन रहबो D तो मेजॉरिटी तम मान को भितरे आंसर D देइछ जदि मु देखिबी देन आसीबा हम क्वांटम कंप्यूटिंग देन आसीबा क्वांटम कंप्यूटिंग तो एक्सेप्ट मु कहबी जने दी जण छले समस्त बहुत बढ़िया आंसर देइछ तम माने इंटरेक्शन तो चलता है कमला कोच ये नहीं नहीं ए हबो नहीं तो D रहबो देन आसीबा क्वांटम कंप्यूटिंग तो देखैबे ऑप्शंस qubit can exhibit in the superposition states unlike the classical bits quantum entanglements enable faster than the light communication quantum computers are expected to solve the problems that classical computer can't
बहुत बढ़िया से करिवो नाउ क्वांटम्स entanglement we कहुचे ताको entangle means what that means when the two particles I'm कह two I would say atoms जदि I'm कह though they are not closely together but they will have the interaction तो क्वांटम्स आम कह सुपर कंप्यूटर जो होता है दीज आर द क्वांटम कंप्यूटर जोटा साधारणतः क्यूबिट्स यूज होता है एंड दिस क्वांटम आजिकली टेक्नोलॉजी बहुत चलती क्वांटम टेक्नोलॉजी सो दैट एफिशिएंसी विल इंक्रीज सो दैट मोर फास्टर इट वुड बी मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग करि परिबो ये मतलब हायर वर्जन आम कहूचे क्वांटम टेक्नोलॉजी जिते आम कहूचे क्वांटम कम्युनिकेशंस मध्ये ही पारे क्यूबिट साधारणतः एटा पचारे तुमको क्वांटम कंप्यूटर रे आम कोटा यूज कर क्यूबिट्स यूज करता है देखिए आंसर को जीवा फटाफट आंसर को आस राजेंद्र कौच डी शत्रु कौच 1 and 3 प्रकाश कौच बी सस्मिता कौच सस्मिता मिश्रा बी आफरीन कौच 1 and 3 चलो फिर देखिए बाकी मैंने दे दियो बाकी मैंने आंसर दियो देखिए तुम मन आंसर कौन रोची इट्स ए व्हाट क्वेश्चन कौन रही क्या ऊपर देख क्वांटम कंप्यूटिंग दे आर वेरी फास्ट क्यूबिट्स रे परफॉर्म करे ऑलरेडी मु तुमको कहि देछि दे विल परफॉर्म इन क्यूबिट्स बट तुमको ध्यान देवा पड़ो जो सॉल्व करूछ जदि तुमको लगुच कि सर मुझे तो पढ़ीनी देख यूपीएससी केबे भी तुमको पचारबन कि क्वांटम रो नेचर केमती लेख ये यूपीएससी अप्लाइड पार्ट को पचारे तुमको केबे कहबन कि क्वांटम कंप्यूटर कर यूपीएससी विल आस्क यू व्हाट अप्लाइड बेस एटा जो लिखा है ना इट वुड बी फास्टर देन लाइट ना लाइट टू फास्टर हे परिबो नहीं it would be not faster than the light to faster he pariboni and that is why 2 got cancel and 1 and 3 would be the right answer तो जोटा कि सस्मिता कहूची qubits is very sensitive that means जोटा में कहूचे chief जोटा कि what देवराधि कहूची के chief जो होची हमरो so that is what this is not faster than the what light this is not faster than the light right so that is why and this will solve the problem like the traditional computers is not that much of I would say like big data in the today's life what we will have big data let's say big data and that big data solving will have more quantum computer will have the quantum technology will be better to solve that big data type of challenges so it would be 1 and 3 then carbon captures and what storage CCS refers to what these are also some of the traditional questions that UPSC do ask MS Jorana chief of Microsoft as Devarthi is saying that this is MS Jorana chief of Microsoft so they will perform in such a what fast performing IoTs that quantum IoTs means what Internet of Things carbon capture and storage the natural this is not talking about natural this is what one kind of artificial carbon capture and storage chalo fir Satru is saying B Afrin is B चलो फिर बाकी मन को देखिए सस्मिता मिश्रा बी कमलाकांत बी नेक्स्ट चलो फिर आंसर देखो आंसर दे फटाफट देखो बहुत बढ़िया ग्रेट प्रकाश शिखा एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द बी ओके चलो फिर देखिए अच्छा देखो से कुछ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज दैट मीन्स व्हाट capturing CO2 emission from the industrials and the storing into the underground now how that would be captured ताको केमती कैप्चर करिबा हमें हां केमती कैप्चर करिबा anyone how that will be captured how this would be captured now this CO2 how it would be captured how anyone which gas is used whether this is what flue gas we will have what some flue gases that flue gases will be used what we will use that flue gases will use what flue gases to absorb it what flue gases that would be so that absorb kari paribo taku
and then it would be captured, then we will put into the underground. Let's say underground in terms of, let's say, oil exploration is done. कौन सी गोटे जगह रे the oils is been extracted or the gas is been extracted, then we will put it to what underground रे आमे ताको सेठी मध्य रखी परिबा. पावर प्लांट मानकरे जो चिमनी थाए, बड़ बड़ जो पाइप थाए जोठू गैस बाहरुची तमरो, भाव एठू बड़ बड़ एमती जो पाइप गुडा अछि जोथरे गैसेस बाहरुची, ए पाइप रे फ्लू गैस थाए. ए पाइप रे कोन थाए फ्लू गैस दिया जाए, सो दैट से ताको कोन कहथे कैप्चर कर देथे कार्बन डाइऑक्साइड को, से कोन करिवो कैप्चर कर दो. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लू गैस दैट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कोन करिवा सॉलिड फॉर्म रे ताको कन्वर्ट करिकी, देन वी विल हैव व्हाट, और आमे ताको नै कि कोन रॉक रे रखी परिबा बिलो द, आमे केबा डेप्थ पूरा ताको रॉक रे नै कि हमें जोठी जोठी ऑयल एक्सप्लोरेशन बा आमे ताको एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी करी सारिछे, से ऑयल फिल्टर मध्ये आमे ताको रखी परिबा. फ्लू गैस को यूज करा जाता है ना. चलो फिर 5 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिशंस एंड देयर पर्पस. mission and their purpose. Aditya 1 to study the sun, that is what L1 को दिया जाइए, एटा तो समझते जानी चाहिए. How many Lagrange points are there? As of now there are 5 Lagrange points already हमें discuss करते हैं here and there. चलो देखो ट्राई करो. ट्राई करो फटाफट फटाफट. आज टे डिफिकल्ट लगुथबो सेशन है ना. आदित्य दिहाइची, चंद्रयान 3 दिहाइची, शुक्रयान and exposat. Try करा. Here you can see the combination. If I here you can see the combination. See the combination. देखो easy अच्छी है. It's a easy, but you have to pick the wrong one. Pick the wrong one. है ना. ताले what आमे कहिबा what is the wrong one. ताले wrong one की. Wrong one is, this is not for the Mars. This one is for what? Moon. This one is for moon. So if 2 got cancelled, your 2 got cancelled, 2 got cancelled, 2 got cancelled. So you will have option what? Option B will remain. Option B will only that would be remain. Otherwise rest would be cancelled. है ना. जोड़ा हमारे प्रकाश कोची, आफरीन, कमला, सुनीता, शत्रु, एवरीबॉडी. तो सेटा तो देखियार थिला. You have to find out a clue. Examiner गोटे clue देई थाए, and you have to pick that clue. Otherwise how somebody will reach out to the answer? There would be a clue. You have to pick it. एजुबो ये तमरो Venus रहिबो. This is also correct. This one is correct. This one is correct. So you can here now answer question number 6. With reference to mRNA vaccine, consider the following. Question number 6. चलो फल देखो 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 फटाफट हबो. Try it. Six number B coach Afrin. Satrujit is B. Sasmita B. Everybody is going for B. B. चलो फिर बहुत बढ़िया. देखा बाकी मैंने भी आंसर दी था. ग्रेट. दीप्ति इज कमिंग B. शिखा B. चलो बहुत बढ़िया. कौन है साइंस टेक बोली कौन डॉर्मेंट हो गलो. प्रकाश B.
चलो फिर चलो ही परियो बहुत बढ़िया चलो. This is what virus. This is not virus. This is RNA. What? It will be used RNA, not virus. It will use what? RNA. So mRNA vaccine, that will carry what? That will carry RNA, not virus. Not virus. This is what? Not virus, and that is why this is wrong. And one is got wrong, one wrong, one wrong. This is the right answer. This would be your right answer. Correct. ହେଇଯିବ. Then ये थिला हमरो. Then 7. Next 7 number question. Question number 7. Question number 7. सेटा हेगिला virus करिबन से. चलो फिर 7. Question number 7. Consider the following pair of technology and their application. And their application. Consider the following pairs of technology and their application. Blockchains, secure digital transaction, Li-Fi communication using visible technology, then metamaterials, that is cloakings and visibility, blue hydrogen produced from the hydrolysis using the renewable energy. ट्राई करो देखिबा. 7A कोच अफरीन, शत्रु ए, प्रकाश ए, सस्मिता ए, सुमित्र बेहरा ए, शिखा दीप्ति also going for the A. Now देखो जदि हाइड्रोजन्स ऊपर क्वेश्चंस आमे देखिबा कि हाइड्रोजन ऊपर क्वेश्चन तो से पचारुछे, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. तो हाइड्रोजन ऊपर क्वेश्चन से माने पचारुछंती ना. ब्लॉकचेन जदि आमे देखिबा आजिकल तमे जानछो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपोर्टेंट. कम्युनिकेशन पई हेई परिबो, ट्रांजैक्शन हेई परिबो, बोथ रही परिबो. एंड बेसिकली आमे कहूचे कोन ट्रांजैक्शन जेमती तमरो आमे कहूचे कोन जो हमरा फोन पे करूचे. लेट्स से वी आर डूइंग व्हाट फोन पे. So this is what blockchain technology. You can't alter that transaction. से transaction को कहीं गोटे alter करि परिबो नाही. So that is why this is correct. Li-Fi अर्थात लाइट द्वारा कम्युनिकेशन ही परिबो. This is innovated by whom? China. आकु किए करथला? China. This is what China. कोन को जो शत्रु लिखुची ब्लॉकचेन बिटकॉइन से. हाँ बिटकॉइन भी ही परिबो. बिटकॉइन भी ही परिबो. बिटकॉइन शत्रु लिखुची. ब्लू हाइड्रोजन्स यूज्ड पावर जनरेशन. अच्छा हाँ जोड़ा सस्मिता कहूँ कि ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस विथ कार्बन कैप्चर. नाउ this one also, so this is wrong. This one is what? Wrong. This one is got wrong. This one is got, oh it repeat is oh na ठीक अछि. So this one wrong. So this is the correct. Now blue hydro, that means hydrogen से कौन कहछि blue hydrogen. जेमती तमरो ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट आमे केबा साधारणतः ये तो आसीबो तमरो आमे कहबा व्हाट कोस्टल्स एनर्जी जितरा आमे कहि परबो. सो दैट वुड नॉट बी द सेट ओके में नबा नाही. एक मिनट सेटा तमरो कार्बन से एमिशन वगैरह आमे कहि परता. ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल्स नाही. इट वुड बी यूजिंग द व्हाट द एनर्जी फ्रॉम द कोस्टल्स एरिया रु आमे कहबा और फ्रॉम ओशन रु तमे किछि नै परबो. हाइड्रोकार्बन better I would say hydrocarbon. Better I would say what? Hydrocarbon. 8 number. Artificial intelligence. चलो क्वेश्चन नंबर 8.
renewable energy, but better to say hydrocarbon लिखले better होगा ना renewable ए renewable भी कही परिबो इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करे पड़िबो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो 8 नंबर ये कुछ आफरीन 1 and 2 सस्मिता ए शत्रु इज ए शिखा ए सस्मिता कोच AGT is not achieved. Now what is AGT? Artificial general intelligence means what? Like human. Like what? Human. It means what? Like human. So whether we have developed any artificial intelligence like a human being, no, we have not achieved, and that is why this has not achieved. That means एमिति कौन से artificial intelligence नहीं that will mimic the human brain. That will what? Mimic the human brain completely. As of now, that mimicking of the human brain completely has not developed, and that is the point. ସେଇଟା ହେଇନି बाकी आर्टिफिशियल तो तुम देख जनरेटिव एआई आज जनरेटिव कौन जनरेट कर आजिकल तुम जान ये जो प्रोफेशन एआई प्रोफेशन बहुत चली जमती जनरेटिव एआई कौन लेट्स से मु कहली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेटिव एआई जदि कहार डाउट थो कि व्हाट इज एक्जाक्टली जनरेटिव एआई कौन ये जानिछ ना जनरेटिव एठी लिखा है ना जनरेटिव एआई अर्थात मु सेथरे जमती इमेज करि परिबी टेक्स्ट करि परिबी कोड बनै परिबी डिफरेंट जिनस को करि परिबी तो सेटा को कहे जनरेटिव अर्थात जेनेरेशन करिवो सपोज तमे ताकू कहबो एआई को के मते गोटे इमेज बनै कि दियो कलिंग वार इमेज पाउनो तमे सपोज लेट्स से यू आर नॉट फाइंडिंग द इमेज ऑफ गांधी जी गोटे बसिकी खाइबार कोठी का सहित पाउनो एआई को कहो कि मेक ए इमेज ऑफ गांधी जी सिटिंग एंड हैविंग फूड तो से कोन करबो बनै देबो तो दैट मींस इमेज बनै देला गोटे जाको हम कहछे जनरेटिव एआई आजकल यही तो चली छी राइट चले तो चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन देखो ऑप्शन टाको देखि दिया अच्छा एटा ऑप्शन सिंगल अच्छा हाँ ग्रीन हाइड्रोजन 9 नंबर ग्रीन हाइड्रोजन चलो ट्राई करो हो ट्राई करो 17 एटा केते सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन बी कहउचंती शत्रु सस्मिता अफरीन शिखा दीप्ति प्रकाश सस्मिता एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर तो दे आर गोइंग फॉर व्हाट बी yes renewable तो obviously আমি যেতর কইছে গ্রিন হাইড্রোজেন you have to use but हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कोन वाटर को स्प्लिटिंग करिया पड़िबो H2O that means ए जो H2O को जेतर हम स्प्लिटिंग करिबा so H2 and O now we need to what split this तो सत आपको स्प्लिट करिया पे we need इलेक्ट्रोलाइजर हमको कोन दरकार इलेक्ट्रोलाइजर and electrolyzer आमे कोन करिबा electrolysis and for the electrolysis we need what energy ताकू रन करिया पे हमको कोन दरकार एनर्जी आ ए एनर्जी जहा हबो सेही बेसिस रे नाटी दिया जिवो से एनर्जी बेसिस रे जहा हबो सेही बेसिस रे नेमिंग करा जिवो जदी सपोज एटा रिन्यूएबल हे गेला देन इट वुड बी तमरो कोन हे जिवो ग्रीन हाइड्रोजन हे जिवो राइट that would be green hydrogen अर्थात जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन बेले आमर कार्बन एमिशन जीरो व्हाट कार्बन एमिशन जीरो राइट दैट मींस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बेले कार्बन रो एमिशन टे जीरो हेछि दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट ग्रीन हाइड्रोजन अच्छा मते को फास्ट हाइड्रोजन boss in India started where
and whether Delhi, obviously it would be what? New Delhi. It was what? New Delhi started green hydrogen. Okay, chale fir. Now, next 9 number questions khatam comes to the 10. This is also important one. The ISRO's, with reference to the ISRO's Gaganyaan missions, which of the following is correct? You have to find out the correct statement. The statement one is that it aims to send Indian astronaut into the low orbit. Vomitra is a humanoid robot that will be part of the mission. It is being implemented entirely by the ISRO without any international collaboration. देखिदेव जदि न्यू दिल्ली लद्दाख भितर डाउट अच्छे यू कैन चेक करके मत कहीपर चलो फिर नाउ अगेन try this. So this is what Gaganyaan mission, and Subhrangshu Shukla, the man who went to the International Space Station, are the first Indian to move that and to stay there, have the experience of the space. After the Rakesh Sharma didn't he didn't go to space, but space को जाइथला, but not to the International Space Station. Rakesh Sharma International Space Station को जाइनथला, it was from the Roscosmos. And Rakesh Sharma is the आम कहबा के mentor of Subhrangshu Shukla. ध्यान से मन के Rakesh Sharma is the mentor for the Subhrangshu Shukla. चले आंसर देखिए D. Everybody is going for the D. That means 1 and 2, 3. This is not entirely. Everybody is going for the D. Deepti, Prakash, Sunita, Susmita. It's not entirely. This is Russia. Who is giving training to us? What? Russia. The Russia the training douchi. That means your astronauts are being trained where? In Russia. So entirely by ISRO, no. It's what Russia is helping us. It's what Russia to help karuchi na. Russia is what indirectly. That means directly, indirectly is helping Russia. And that is why we can't say it's a completely without any international collaboration. We are having international collaboration with Russia. With whom? Russia, where the astronaut is being given training. Okay, Ladakh. Okay, done. Correct. Correct. So that is why it would be what? 2 and 3. Sorry, 1 and 2. Sorry. Answer would be 1 and 2. So answer would be what? 1 and 2. The correct answer would be 1 and 2. That would be 1 and 2. That would be the correct answer. Next questions. 5G technology. Next question. ये भेज बनाबे एटा बुझी पालो तो गगनयान मिशन. Why this mission? Humanoid robot, that would what? Vomitra. Eta man rakhiwa. And this is very important. Humanoid robot will be also there. This is also important. With reference to 5G technology. चलो फिर देखो ये ट्राई करो ही जब ट्राई इट. $11 number. D is Afrin. Dipti is going for D. Satru is going for D. Okay. चलो फिर बाकी मैंने भी दे दिया. देखिए सस्मिता देखिए मैं ताले देखो 5G टेक्नोलॉजी हमें कहीं आन ले. What? To improve the efficiency. Simple ये सब change कहीं की होची to improve the efficiency. Now this 5G technology will improve your efficiency again. That will improve the efficiency. Why that?
because of speed, because of accuracy, because of speed, right? So these things will be there, and it will use what millimeters waves for the ultra high speeds communication. So it is correct. So that what frequency, we need more frequency, more base station will be required, more what base station would be required as compared to 4G because of the short wavelength would be short, right? Ultra low tenancy, मतलब बहुत जल्दी applications हमके such as remote आमे केबा surgery कथा नहीं जो और automations of vehicle कथा नहीं जो it would be low tenancy अर्थात लैक करिबनी टेनेंसी अर्थात बहुत लैक करियो जेंति हमें 4G रे कोन सो गोटे जिंस बुलुची से नहीं गोटे सेकंड तमरो लेट्स हमें केबा 2-3 सेकंड रे गोटे मूवी डाउनलोड हे जिवो एवरीथिंग वुड बी इन ए सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्लिक कल डाउनलोड आउ टाइम लागिबनी 2G रे जेमति बुलुथिला तो से 3G आसिला 4G आसिला डायरेक्ट हम देखले 4G देखले 2G ରୁ 4G को आसिला 4G देखले स्पीड बोले अबे 5G आसबो अगेन दैट विल इंप्रूव ये कोन करबो इंप्रूव करबो and that is why applied and all, so answer would be what? All. The answer would be all. So samaste good answer deicho, right answer deicho. Kamalakant also everybody's RCB fan also there, right? RCB 1 2 3 4 D, and Kamalakant Sumitra Prakash, everybody is going for the D, and the right answer also D, all of the above. Now 12th number question number 12, the semiconductor mission with respect to what? In the context of semiconductor mission, which of the following statement is correct? So that means your question is based on what? Semiconductor mission of India. Again you can see the questions. India's semiconductor mission, question is what? Question ta bhalse dekho, so that we will move to the option को आमे जिबा बा स्टेटमेंट को मु देखेबी तम मानको है ना. Here you can see it aims to promote what? Domestic manufacturing of semiconductor chip, compound semiconductor like gallium nitrides are included into the scopes. Emission is entirely private sector driven without the mission is entirely private sector without government support. चलो फिर, so this one is question number 12. Question number 12 answer already आसीगलानी. चलो 12B कोची दीप्ति. चलो फिर देखियो बाकी माने ट्राई करो. Afrin is going for B, Prakash is going for B. Not entirely private sector, that is the right answer. So जदि हम कहे it's not entirely private sector, it's not entirely private sector, ये entirely private sector नुह, but there is also government रही. कहना एटे तो तमे एठी देखलो ना government started, but who has started is government. तो government तो करूची, तो if government is starting तो काई की पुनी हबा entirely. So this is not entirely, right? So this is not entirely. तो entirely हो नहीं, this is not entirely, this would be government collaboration is also there. So government participation is also there. What? Government participation also there. This is not entirely private mission. बहुत बढ़िया, right answer तो मैंने देइछो. Question number 13. The Internet of Things refers to what? This is very easy one, right? You can go for it. Odisha also I did a videos on that. How the Odisha government also promoting the semiconductor industry in the Bhubaneswar, in the outskirts of Bhubaneswar, how they're giving incentives to, and attracting the what I would say investors through the Utkarsh Odisha, or I would say Make in Odisha conclave.
ଆମର already that Assam in Gujarat, Assam, they have already started. It's like Tata. So Tata company have already started it. And 13, come to the 13. 13 was answer is coming from Sasmita and Prakash B. Okay, which one is that? Internet of Things. The statement 1 is saying using satellites for the internet services globally. Only networks of physical subjects enables with the sensors and connectivity. Let's say I am having this one. This is also IoT's Internet of Things because I am connecting this one. This one is a what? Physical object. ये जो board टा देखो तो this board is a physical object but enabled with sensors and connectivity. ये connectivity को बढ़ाऊँगी. That means IoT's things are what? The things. That means these are the things. It's a pencil, but through this pencil I can connect it. Through this mobile I can connect it. This is mobile. Through this I can connect it. So these are the Internet of Things. These are the physical things. We'll have ability to connect the what? Internet by use करि परिबा आमे नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट हम कहि परिबा ताको में नेटवर्क. तो आंसर वुड बी व्हाट? आउ गोटे मु टेक्निक कहितली जदी तुम माने जानि भी परुनो. मु कहितली स्टेटमेंट वुड बी लॉन्ग, it would be moderate tone, it would be long, the statement will be long and moderate tone, and moderate tone, and this one also long with moderate tone. So this is also, this is how also you can pick the questions answer. That is also correct. सही बढ़िया भी तुम पिक करि परिबो. That is also correct है ना. हे परिबो एबे. Now 14 number questions. Small modular reactor, this is very important. ये बहुत importance energy security पाई. Small modular reactors, they are nuclear reactor with capacity less than 300 megawatt. They can be deployed underground for the safety. They can be used with thorium based fuel. 14 number question. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब. चलो फिर देखो देखो 14 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है जी. चलो देखो देखो बढ़िया बढ़िया आंसर दो तुम मैंने. ग्रेट. अगेन ध्यान से देखो ये 2024 रे आसला जितरे बजट हितला. इन 2024 बजट शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग it was announced in the 2024 budget, it was announced that the small modular reactor will be done. तो सेटा करा जिवो. Okay, now से लिखे ना can't use thorium ना, it can use thorium. thorium की यूज कर परियो काहे की यूज कर परियोनी. तो रॉन्ग हबो काहे की एटी can't जो लिखि दैछे ना can't use thorium. तो मु आंसर देखि परुछि 14 रो आंसर जदि कहबी. शत्रु कहउछि ए, आफरीन ए, दीप्ति ए, सस्मिता ए, शिखा ए, सस्मिता बेहरा ए, प्रकाश, कमला समस्त ए पे जाउछि. सो इट कैन यूज थोरियम ना. देख कांट कहीं थोरियम भी यूज तो हो पार. राइट, थोरियम यूज जदि आम गोटे सेकेंड पे भाव. अच्छा जब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कले आम थोरियम की यूज न कले ताले आमर इंडिया पाखे तो थोरियम अच्छी देन लाभ कौन है. वी शुड और वी मस्ट यूज द थोरियम. Now we are coming 15. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15. ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 15. थोरियम हो पार, डोंट वरी. with reference to Chandrayaan 3 mission हो पार, आराम से हो पार. ट्राई करो 15.
हे परिबो ए जो ना तो ताले देखियो आमे देखियो चंद्रयान 3 से को देखो इट इज सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग बहुत बढ़िया कैरीज द ऑर्बिटर्स along with लैंडर्स एंड रोवर ऑर्बिटर से कहो ऑर्बिटर्स लैंडर एंड रोवर द विक्रम लैंडर नियर द मून्स साउथ पोल ताले 15 रो देखो सी 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 चलची एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द सी है ना अच्छा सी कहीं की हम देखो बिकॉज वाई सी बिकॉज एथरे ऑर्बिटर नथिला इट वाज ओनली लैंडर एंड रोवर विक्रम्स एंड प्रज्ञा विक्रम्स एंड व्हाट प्रज्ञा इट डिडंट हैड एनी ऑर्बिटर नथिला ता पाखरे लैंडर थिला एंड रोवर थिला so that was what lander and rover orbiter was not there हाँ किंतु चंद्रयान 2 रे ऑर्बिटर थिला ऑर्बिटर वाज देयर इन 2 ध्यान से मन रखिबो देयर वाज ऑर्बिटर इन 2 चंद्रयान 2 रे ऑर्बिटर थिला राइट जेतरे तमे चंद्रयान 2 लिखिबो ऑर्बिटर थिला नेक्स्ट 16 नंबर ऑडियो ब्रेक होउची एबे नाउ I think it's good. सिक्सटीन नंबर इजी अच्छी कर समस्ते 16 नंबर आदित्य L1 मिशन इसरो इज प्राइमरली डिजाइन टू देखो ये तो एते इजी क्वेश्चन 8 इजी क्वेश्चन आउ कोन दे परिबो को समस्ते आंसर दियो एवरीबॉडी चलो फिर दैट मींस एटा कोन पे एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर ना कंडक्ट इंटरस्टेलर स्पेस ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट ऑफ द सन and yes so this is what the observe the suns from the L1 point कहा को से सन रो कोरोना क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर ये सब को ऑब्जर्व करियो कहा को सन रो मु कहितले एटमॉस्फियर केतेटा अछि तीनटा the three atmosphere of the suns they are what that is the photosphere then would be chromosphere then corona the outer one 17 मैच करेबो तमे you have to match you have to match मैच कराइबो चलो फिर मैच करिबो एटा yes that is Chandrayaan 5 not 2 so yes लुपेक्स लुपेक्स जोटा ये कहउछ एबे कि
सेटा लूनार एक्सप्लोरेशन पे ना लूपेक्स टा है ना लूपेक्स जॉइंट लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन यस सो दैट वुड बी लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन किए करूची दैट मीन्स आम कह जॉइंटली कराचुची दैट वुड बी नॉट फॉर चंद्रयान राइट दैट इज लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन आम कह तो तेणु करके दैट वुड बी करेक्ट सेटा रॉन्ग हो तो तुम हो कौन बी वुड बी द करेक्ट आंसर व्हाट बी वुड बी द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ग्रेट बहुत बढ़िया ना 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 18 चंद्रयान 5 ना चलो फिर नेक्स्ट With reference to the Gaganyaan mission, consider the following statements. It is India's first human space flight program. एटा तो देखी छे हमें अच्छा एटा ऑप्शन चेंज होची कि अच्छा हो ठीक अछि ओहो एठी तुमको टिके चेंज कराई छै हां टिके ऑप्शन चेंज अछि ऑप्शन ओके ठीक अछि चलो फिर चलो चलो एटा ठीक अछि ओके डन डन किछ नै एटा हमें देखितले and that would be launched from the GSLV Mach 3 ये कोठू लॉन्च हो GSLV Mach 3 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देखो ये क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत ही हाई अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत हाई तो जोटा तुम गगनयान मिशन रही ये क्वेश्चन आसो तुम पचार GSLV Mach 3 यूज कराऊँगी इट वुड बी फीमेल ह्यूमनॉइड रोबो स्पेस फ्लाइट fast human space flights of India and this is a most targeted prelim questions the what one of the most targeted prelim question जोड़ा कि समस्ते राइट आंसर देइछो and this is very important again I repeat GSLV Mach 3 क्रायोजेनिक तमर कोन fuels को यूज करा जिवो and that is the विकास इंजन जोटा हम खोज डिस्कस करथिले 19 number question consider the following statements ISRO satellite you have to match के ये जो सब रही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट व्हिच ऑफ द अबव आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इजी क्वेश्चन देखो हे जो ट्राई करो हे जो एटा हमें डिस्कस करथिले आगुरु GSAT INSAT हमें डिस्कस करथिले GSAT फॉर द कम्युनिकेशन INSAT फॉर द हमें डिस्कस करथिले वेदर वगैरह फाइन है ना कैटोसैट ओशन सैट अच्छा रिमोट सेंस अर्थ ऑब्जर्वेशन किए करे ऑब्जर्वेशन अर्थात कोन अर्थ रे कोन होउची अच्छा देखो जेतले हम कहू ना अर्थ ऑब्जर्वेशन ता मीनिंग कोन लेट्स से हियर इज योर अर्थ एंड द सैटेलाइट इज हियर इन द स्पेस रे से देखुची अर्थ को ऑब्जर्व करछ अर्थात टेंपरेचर बढ़ुची कि नहीं ओशन करंट कोन होउची फॉरेस्ट एरिया घटिला ना कमिला तो ऑब्जर्व करूची सो दैट इज व्हाट ऑब्जर्विंग सेत में आपको हमें कहिबा remote sensing satellite or we will call it what remote sensing satellite what remote sensing satellites so these are what remote sensing satellite this one what this will have resource sat this is what so these are the correct not this why not INSAT kahi ki habani ki kahbo why not INSAT anyone why not INSAT anyone वेदर पाइबा कहितली अरे वेदर पाई GSAT कोन पाई तमरो
GSAT कौन पाई थाए कम्युनिकेशन पाई वेदर एंड कम्युनिकेशन तो साधारण तो वेदर पाई थाए ना से आम चलो नेक्स्ट इनसैट सीरीज कौन पे आस थाए INSAT series. With reference to the INSAT series, consider the following statements. They are mainly used for the communication and meteorological services. INSAT 3D is launched in 2024. It dedicated to weather. एक मिनट वॉइस ऑफ सी हाँ ठीक ठाक ओके and monitoring. INSAT satellites are placed in low orbit. देखो ट्राई करो टिके दिमाग लगे बाहरी जो आंसर टिके दिमाग लगे आंसर बाहर जो जस्ट दिमाग लगे बेसी है जस्ट दिमाग लगे बाहर जीव तुमको INSAT सीरीज तो देखिले एबे लो ऑर्बिट रहबनी के कोच देखियो हां बहुत बढ़िया तो एटा तो देखिले ना INSAT सीरीज टा देखिले कि इट वुड बी करेक्ट राइट ये कह जे तुमरो लो ऑर्बिट नो इट वुड बी GEO it would be what geostationary orbit it would be what geostationary orbit it would be in geostationary orbit ये कोठी रहबो geostationary orbit रहबो and that is why 3 is incorrect A will be answer it would be what geostationary orbit GEO it would be GEO geostationary orbit 21 এটা তো আমি দেখিছে না ক্যাটোস্যাট রিসैट बी ओशन सैट ছাড়া ছাড় তাহলে আস 22 को आस 22 22 को आस ट्वेंटी टू डी कहूँ शत्रु देन बाकी माने बाकी माने देखिबा शत्रु डी तापरे अफ्रीन डी नेक्स्ट ऑल कहूँ सस्मिता डी NavIC India's regional satellite this is correct यहाँ पर UPSC दी थर क्वेश्चन पचार UPSC has already asked twice questions this one correct it would be geostationary and geosynchronous both use करे से but geostationary and geosynchronous both को यूज करिवो से राइट मीडियम ऑर्बिट नुह geostationary and geosynchronous both को से यूज करे कौन कहिछ से it uses combination of geostationary and medium orbit लिखाई छी बा अर्थ रो और मीडियम ऑर्बिट लिखाई छी ना कौन लिखाई छी एठी स्टेटमेंट्स करेक्ट तो कही ना ठीक अच्छी तो 22 ए ही हबो and the last one astrosat mission ISRO कौन पे करूची astrosat and the last question astrosat
astrosat हम देखिबा and the last one of the day. The correct answer is what? A. So that would be India's first dedicated space telescopes mission. तो एटा तमरो आसीबार chances prelim रे high. Fast ba, this is the fast dedicated India's and that is why high. तेणु astrosat आसीबार question बहुत ही चांस अधिक कारण एटा होची फास्ट इंडिया रो मु कहिछि ना कोनसी जिंस बेस्ट ओस्ट लेटेस्ट तो से आसीबो सथि पई ताकू पढिया पड़ियो तुमको राइट astrosat तुमको पढिया पड़ियो and these things is very necessary. ठीक अछि चलो फिर तो आज सेशन को एठी हम रखिबा तो आज यूजुअल तुम चलो सेशन जमती डेली चलुच आसो तुम मैंने कंटिन्यूटी कर किसी ना किसी नुआ शिक्षा को मिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इट राइट प्रत्येक दिन किसी ना किसी नुआ तुमको देखा मिल एंड दैट विल हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे तो जो मसे 2 मास 3 मास आम कंटिन्यू करवा मसे प्रिलिम्स जाए आम जो कंटिन्यू करवा ओबियसली किसी ना किसी नुआ पॉइंट्स तुमको मिल एंड है ना चलो फिर थैंक यू ऑल एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल थैंक यू एवरीवन.